Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are discussing about the most important questions from signal and systems that may be asked in GATE 2026. Okay, so let's discuss about the first questions. Okay, so first question say that the complex Fourier series coefficient Ck of the output yt if the given input is there and st of there. So what is the value of yt? So हम लोग पहले क्या बनाते हैं, एक LTI सिस्टम है, डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें समझ में आए। एक LTI सिस्टम है, इधर क्या होगा आउटपुट, इधर यह इस साइड क्या होगा इनपुट। ओके, सो एक LTI सिस्टम है, यहाँ पे h ऑफ t की वैल्यू e⁻⁻4 mod t गिवन है। ओके, सो हम yt को क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं, c ऑफ k, जस्ट लाइक गिवन है क्वेश्चन में c ऑफ k इज आउटपुट। तो c ऑफ k को हम क्या लिख सकते हैं, c ऑफ k इज इक्वल टू h ऑफ k ओमेगा नॉट इंटू ए के। सो अब हमें क्या 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 फाइंड करना है, ए के फाइंड करना है, और अब h ऑफ k ओमेगा नॉट फाइंड आउट कर ले तो हमें c के मिल जाएगा। सो यहाँ पे x ऑफ t किस फॉर्म में गिवन है, x ऑफ t को ड्रॉ किया जाए, x ऑफ t हमारा -2 पे ये आएगा और -1 पे ये आएगा एंड 1 सेकेंड 1 पे ये है एंड 2 पे 1 है। ओके, एंड 0 पे 1 है। ओके, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, t नॉट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, t नॉट इज इक्वल टू 2। ओके, सो टाइम इतना दिया हुआ है तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी। सो 2 पाई बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो अब हम ए के फाइंड करते हैं, क्या होगा ए के का फॉर्मूला होता है ए के इजकल टू 1 बाई टी नॉट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2, टी नॉट कितना है 2 से लेके कितना हमें गिवन है डेल्टा ऑफ टी माइनस डेल्टा ऑफ टी माइनस 1। ओके, डेल्टा फंक्शन है, देखो आप डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी 0 पे, डेल्टा टी माइनस 1 पे। सो ये इसका ये बन रहा है। ओके, एंड ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। ओके, एंड डी टी। सो दीज आर द फॉर्म। So when you solve this, then 1 by 2 delta of t e to the power minus j k omega naught t, okay, dt minus of 2 delta of t minus 1 e to the power minus j k omega naught t dt। ओके, एंड एक प्रॉपर्टी क्या होता है डेल्टा फंक्शन की, जब हमें डेल्टा टी और ये इंटीग्रेशन के पार्ट में दिया रहे तो वो डायरेक्ट इसके फॉर्म में आ जाएगा, किसके फॉर्म में, ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, जो एक्स ऑफ टी ये रहेगा उसके फॉर्म में आ जाएगा। डेल्टा ऑफ टी मान लो कोई एक्स ऑफ टी रहता तो वो एक्स ऑफ टी आ जाएगा, वो उसके रेंज में आना चाहिए बस, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ टी इजकल टू 0 हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें टी इजकल टू 0 एंड यहाँ पे टी इजकल टू 1। ओके, सो जब हम पुट करेंगे इसका वैल्यू तो टी इजकल टू 0 क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 0 इज 1, ई टू द पावर 0 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर 0, डेल्टा टी हट जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी और एक्स ऑफ टी रहेगा तो एक्स ऑफ टी आ जाएगा, ई टू द पावर 0। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी इजकल टू 1। ओके, टी इजकल टू 1,
So e to the power 0 minus e to the power minus j k omega naught. ओके, सो गिवन दैट ओमेगा नॉट हम लोग क्या फाइंड किए हैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई. ओके, सो when we put this value pi, e to the power 0 is 1. Okay, so 1 minus e to the power minus j k, 1 second, j k pi. Okay, so हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a k को 1/2 1 minus 1 to the power k. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 minus 1 इवन रहेगा तो क्या आ जाएगा 0. जब इसको k की वैल्यू इवन रख के देखो तो 1 minus 1 क्या आ जाएगा 0. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k जब इवन रहा. ओके, एंड 1 अब अगर ऑड रहा तो क्या आ जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 1. सो k इक्वल टू ऑड पे क्या आ जाएगा हमारा odd integer. This is also is a odd integer. This is also a odd integer. Okay. So take a screenshot of this slide. I remove some part of the portion in this. Okay, h of t is given that e to the power minus 4 mod t. Okay, so we can write like that, e to the power minus 4t, e to the power minus 4t when t is less than 0. Okay, when t is less than 0, e to the plus 4t, because mod हटेगा तो plus हो जाएगा. Okay, and e to the power minus 4t, t will be greater than 0. Okay, so we can write like that, h of t equal to e to the power plus 4t u of t, sorry, u of, 1 second, u of minus t and plus e to the power minus 4t u of t. Okay, so जब आप इसे कन्वर्ट करोगे डोमेन में, ओमेगा डोमेन में, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस जे ओमेगा प्लस 1/4 प्लस जे ओमेगा. ओके, सो सी के हम लोग लिख सकते हैं, अब सी के एच ऑफ के ओमेगा नॉट इंटू ए के, सो एच ऑफ पाई के ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई के, एंड ए के वैल्यू इज व्हाट, a k value is 0 for k is even and 1 for k is odd. Okay, so come to this portion of in this place. Okay, so हम लोग लिख सकते हैं c k equal to 0 for k is even integer and एच ऑफ पाई के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एच ऑफ पाई के ओमेगा वैल्यू की जगह पाई के डाल के देखो तो क्या आ जाएगा 1/4 4 माइनस जे पाई के प्लस 1/4 प्लस जे पाई के when k is odd integer. Okay, okay, so this is the answer of this question. Okay, so come to the next question. In this question say that the Fourier transform of the signal h of t is h of omega, the magnitude of what? So this is the very simple questions. When the question asks about what is the magnitude of h of j omega. Okay, so first solve this step by step, then we find the solution. 1 plus 2 e to the power minus j omega, 2 e to the power minus j omega plus 1 divided by 2 e to the power minus j omega. So 1 plus 2 e to the power minus j omega cancel out each other, and 2 e to the power minus j omega we have got. So magnitude of h of j omega is what?
magnitude of 2 e to the power minus j omega is what? E to the power minus j omega magnitude is 1. So 2 is the answer of this questions. Easy. Come to the next question. So in this question convolution is there. So convolution का प्रॉपर्टी याद करके आप लोग कोशिश करो क्या होता है. इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. सो u ऑफ n, कन्वोल्यूशन ऑफ u ऑफ n क्या होता है? n प्लस 1 u ऑफ n. ओके, सो अगर आप इसमें थोड़ा सा डिले करते हो, जस्ट लाइक n इक्वल टू n माइनस n1 एंड हेयर n इक्वल टू n माइनस n2. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? n इक्वल टू n माइनस n1 प्लस n2. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके u ऑफ n माइनस n1 कन्वोल्यूशन विथ u ऑफ n माइनस n2 एंड n माइनस n1 प्लस n2 प्लस 1 u of n minus n1 plus n2. Okay, here is 1 is there, that's why n minus n1 plus n2 plus 1 and u of n minus n1 plus n2. Just we put this value in this equations. Okay, so in the given that n1 value is what? n1 value is 3. Okay, so u of n plus 3 and put the value of your n2 is equal to 3. So u of n minus 3. Okay, and n1 plus n2. So 3 minus 3 is 0. So n1 plus n2 equal to 0. Okay, so u n minus 1, n1 plus n2 is 0. So n minus 1 u of n equal to n plus k u of n plus k minus 1 is given in the questions. This convolution says that y of n is equal to u of n plus k, u of n plus k minus 1. So compare these two, then we have got u of n is what? N plus k minus 1. So k is 1, then 1 plus 1 is 0. Okay, so then we have got u of n. If k is equal to 1, then we have got u of n. That's why the value of k is equal to 1 is the answer of these questions. Okay, simples. Come to the second method to solve these questions with the help of Z transform. So firstly I remove some portion of the equations so that we got some space to write down the second method of the solution. So method second. Okay, so method number 2, what is u of n of Z transform of Z transform of u of n? Z by Z minus 1 where mod Z is greater than 1. Okay, and x1 of n is given that u of n plus 3. So n plus 3 means here is z cube z divided by z minus 1, the mod z is greater than 1, and x2 of n equal to u of n minus 3. So n minus 3 तो क्या हो जाएगा? z to the power minus 3 into z divided by z minus 1. Okay, and here is mod z is greater than 1. So x1 of n convolution with x2 of n, we can write like that: z transform x1 of z into
x2 of z. So x1 of n convolution with x2 of n, we can write like that, z squared divided by z minus 1 whole square. If you multiply these two equations, then we have got z squared divided by z minus 1 का whole square. Okay, so one property we also know that n u of n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z divided by z minus 1 का whole square. Okay, so n plus 1 u of n plus 1 z ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा इसका, z स्क्वायर डिवाइड बाई z माइनस 1 होल स्क्वायर. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं u ऑफ n माइनस 1, सॉरी u ऑफ n माइनस 3, u ऑफ n n plus 3 and n minus 3 convolution with, so u of n plus k and u of n plus k minus 1. This is the given in the questions. Okay, so when you compare these two equations, then n plus k equal to what, n plus 1, n plus k equal to n plus 1. Okay, so n cancel out each other and k equal to 1 is the answer of these questions. Easy. Come to the next questions. These are the second method to solve these questions. Okay, in these questions ask about the minimum and non-minimum phase systems. Okay, so f1 z is the minimum phase system or non-minimum phase system, we have to find that. Okay, so h of z is given that 6 plus z to the power minus 1 minus z to the power minus 2. Okay, so when you solve this, then we have arrived 6z square plus z minus 1 divided by z square. And what is the 0 of this h of z? 0 is z to the z equal to minus 1 by 2 and 1 by 3. These are the two factors of the zeros which are less than 1. So inside the circle, inside the unit circle, inside the unit circle, in this, inside the unit circle, minus 1 by 2 and 1 by 3 is less than 1. So inside the unit circle, so we can say that this is the, so this is minimum phase system, minimum phase system. Similarly, this is f1. Okay, this is f1, and for f2 we can write like that, h of z equal to, given that 1 minus z to the power minus 1 z to the power minus 2. So when we solve, then we have arrived z square minus z minus 6 divided by z square. So what is the two factor, 0 of two factor? In the numerator part, z is equal to minus 2 and 3. Minus 2 and 3 are outside. These factors are outside the unit circle. So outside the unit circle means this is non-minimum phase system. This is non-minimum phase system. So conclusion is that f1 is a minimum phase system and f2 is the non-minimum phase systems. Okay, come to the next question. Okay, in this question ask about a system is given g of t 6 rectangular of t plus 4 divided by 2 conjugate with delta of 3t, then the value of g of minus 4. So we have to find g of t in the g of minus 4. Okay, so we can write like that, 6, given that 6 rectangular of t plus 4 divided by 2 conjugate with delta of 3t. So what is the property of delta of alpha t?
delta of alpha t equal to 1 by mod alpha into delta of t. So we can use this concept. So 6 by del of 3t 1 by 3. So 6 by 3 rectangular of t plus 4 divided by 2 conjugate with delta of t. So g of t is 3 to the 6, 2 rectangular of t plus 4 divided by 2, or we can write like that, just like x of t conjugate of delta t equal to x of t. Okay, so suppose this function is x of t and delta of t, so this function is right x of t, 2 rectangular of t plus 4 divided by 2. So in this question asked about what is the value of g of minus 4. So t at t is equal to minus 4. Okay, so g of minus 4, put the value of t and get the solution. 2 rectangular of minus 4 plus 4 divided by 2. So minus 4 and plus 4 is 0. So 2 rectangular of 0. So what is the value of rectangular of 0? From the properties of Fourier transform, we can write like that, rectangular of 1 minus 1 by 2, 1 by 2 and 1. This is the rectangular of t. This is t and this is 0. So rectangular of 0. So rectangular of 0 is 1. At t is equal to 0, the value is 1. The value is 1. So we can write like that, 2 into 1. So the value comes 2 is the right answer of this questions. Okay. Come to the next question. So if this video is helpful for you, so please like and subscribe this channels. Thank you so much guys. I hope you understand this concept, and see you in the next video. Thank you so much.